Hi guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about MEG 11 American novel. So what we need to write on American novel, as you can see, the entire course was on the board. Sir, मैंने सिर्फ नाम लिखे novels के, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया. Because it's all about that how we're going to write down on paper. It's not that we do know the stories of these novels or how we're going to write down. The most important thing that how are you going to write down these answers in your examination. The basic thing that works for you is the way to write. How you are going to conduct that paper. The first and the foremost thing that we need to keep in mind, यार पेपर कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा और किन चीजों को दिमाग में. The first thing पहले क्लियर कर लो कि आपको पूरी वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो आपने की थी MEG 3 को लिखते हुए. Yes, I'm talking about British novels. So there's a difference between a British novel and an American novel. I do agree, but the way of writing must be same. आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसी होनी चाहिए और उसमें दो तीन चीजें ऐड करनी है. हर आंसर के अंदर आप पहले पूरा का पूरा एक प्लॉट बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. आप लोग टेलिंग कि इनमें से कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन से 6 जो है अगर आप पकड़ लेते हो तो आप पेपर बहुत इजीली क्रैक कर लोगे. लेकिन पहले क्लास है कि हम पेपर कैसे लिखना है, हाउ गोइंग टू राइट ऑन पेपर. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, द फर्स्ट थिंग आपके आंसर में जो होनी चाहिए इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग हर आंसर में आपको करनी है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन. वो आपको पूरी हाईलाइट करनी है एंड देन कम टू द सेकंड पार्ट. Basic structure. It's all about the writing style. What does mean by the writing style? So we do know that we do have a 3 types of writing styles. That is narrative techniques, first person, second person, third person. वो इनमें जब हम बात कर रहे थे, अगर मैं एग्जाम्पल सिस्टर कह रही थी, then we do have a third person narrative in that. We cannot write down in really the last Mohicans. मैंने आपको सिस्टर कैरी बोला बिकॉज दिस द डोमिनेंस ऑफ थर्ड पर्सन नरेटिव. अब आपको लिखना आना चाहिए कैसे लिखते हैं हम आंसर की प्रेजेंटेशन करेंगे एंड देन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ the implementation of ACT. I have already mentioned you in my videos that while you writing the answer novels आपको ACT को फॉलो करना है. Analyze the question concept and the test. The test do come होता है नॉवल में हमेशा समरी का कुछ पार्ट आ जाता है लेकिन वो हमेशा हमें at the end add on करना होता है. ये हमें आना चाहिए. And then to grab maximum marks we need to use the themes that work in each and every novel. हमें वो हाईलाइट करनी है. So here the inclusion of the themes in your answer that really important. और मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ता and I cannot expect you guys to write an answer without including themes in examination. That is something that gives us the edge in our answer. एक टीचर ये एग्जाम में जब आंसर को पढ़ रहा था उसको वो चीजें मिलती है ना तो डेफिनेटली उसके पॉइंट बनता है कि हाँ यार दिस इज इजी. नहीं तो आप सोच के देखो इनमें है क्या, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टोरी लाइन से आपने स्टोरी पढ़ी और पेपर से क्या आगे नंबर नहीं मिलने वाले. एक 20 नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे. लेकिन जब आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल इन स्टेप्स को फॉलो करके होती है, दीज आर स्टेप्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने आंसर को पूरा फॉर्म कर दो तो टीचर डेफिनेटली गिव यू लीस्ट 15 to 16 मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन. नाउ यू कैन कैलकुलेट कि आपके मार्क्स क्या बन रहे हैं. This what I want from you. Preparing I think is really important, but how you going to prepare? अब आए थे जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं. तो गाइस स्टेप बाय स्टेप याद करो. सबसे पहले क्या करना है आपने किसी भी नॉवल को ढो. सबसे पहले आपको द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज
to study the plot. Second, सबसे पहले हर नॉवल का एक प्लॉट क्लियर करना है, और जैसे आपने प्लॉट क्लियर कर लिया, आपको क्या करना है, सेम थिंग, उसकी समरी अपने वर्ड्स में अपने रजिस्टर पे लिख लेनी है. दिस यू गाइस हैव टू डू. First thing, you need to clear the plot. As you clear the plot, now you need to write down the summary in your register by your own, without really seeing anything, in your own words. And then come to the second one. Characters. That is what I always mention in my videos, that for novels, it's really important to have a command on the characters. There are two characters in every novel, the major and the minor. You guys need to clear the characters first of all, and then make a chart. Make a chart that linked all the characters all together. How they have been linked? वो सारे के सारे characters एक दूसरे के से linked हैं. आपको पूरा एक चार्ट बनाना है, एक फ्लो बता पूरा हम बनाते हैं. मतलब मैंने कहा सर द ग्रेट गेट्सबाय की बात करता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर आने ही आया 100%, तो मैं गेट्सबाय से जो लोग करेक्ट हैं उनको सेंटर पोजीशन देता हूँ गेट्सबाय की, और उसके साथ सारे लोग जोड़ देता हूँ. वो चार्ट बनना चाहिए. द फर्स्ट प्लॉट, सेकंड कैरेक्टर्स, थर्ड थीम. Yes, we need to rule out the theme. If the themes are clear, then you can write down all in an easy manner. और ये सारी की सारी सीक्वेंस मैंने अपने नोट्स में दी है. If you guys really do have my notes, that's good. Don't have, you can get the notes and start preparing this. This will really make the things different. The first thing, second and third, and then come up to the fourth one. That is really important. Command on a narrative technique. The way the writer write down that storyline. Narrative technique. These are the four things that you people have to hold in a perfect manner. Then come up to the last phase of this video class. As I earlier told, कि मैं बताऊंगा ये कौन से 6 just 6 अगर हम कर लेते हैं तो हम इस पेपर को बहुत easily क्रैक कर लेंगे with these 80 marks. The first of my choice is Sister Carrie. There is no doubt about it. If you can really showing all this, you can see all that. Sister Carrie कुछ नहीं, सबसे important mistake है जो हमें आना चाहिए. And then we'll come to the next one, that is the Great Gatsby. सर देखो दो चॉइस मैंने बता दी. अगर आप लोगों को फॉलो करना, आप चेक कर सकते हो. मैं अपने फेसबुक इवन इंस्टा पे भी अपने बेसिक्स में से इनको हाईलाइट करता हूँ. इंट्रो में आया था. You guys can follow me on Insta too by the name of Classy Rahul. So guys, follow there so that you can get everything too. The first two, Sister Carrie. The second one, the Great Gatsby. And now time to work for the color purple. सीधा छलांग मार के नीचे आ गया. सर रीजन क्या था? रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था. यू गोइंग टू गेट नो कि ये पेपर में आना ही आना है. बाकी सब मैं छोड़ देता हूं, मैं ये नहीं छोड़ता किसी भी आप में भी. एंड देन वी आर हैविंग द फ्लोटिंग ऑपेरा. सो फर्स्ट फोर अगर आप देखो तो मैंने फर्स्ट फोर कर दिए. सिस्टर कैरी, द ग्रेट गैट्सबी, द कलर पर्पल, फ्लोटिंग ऑपेरा. नाउ आई नीड टू कम टू द लाइट इन ऑगस्ट. सर 5 हो गए. सर एक रह गया सिर्फ. अब किसको लेंगे? द हाउस मेड टू टाउन और द लास्ट ऑफ मोहिकन्स. ओ आई कैन हैव अ ब्लैक स्प्रिंग. नो, आई एम गोइंग टू वर्क विद द कैच एंड द रे. सो दीज आर माय 6 जो मुझे ऑन टिप करने. आपने कहा 1 2 3 4 5 and 6. What about others? Can we skip? So up to you. If you don't have much time, you really don't want to waste it, then go with these 6, but make sure that these 6 are the perfect one. आप एक एक चीज जानते हैं. अगर ऐसा है then go with these 6 only. And if you don't want to take the risk, then do follow everyone. कोई दिक्कत नहीं है. सारे के सारे नोट्स में आपके पास हैं. एवरीथिंग इज देयर. ऑल द वीडियोस आर ऑन द प्लेलिस्ट. आप देख सकते हैं. सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है जो मैंने इस वीडियो में बोला है कि वो सारी चीजें आपके पेपर में होनी चाहिए. एक छोटा फीडबैक लेते हैं.
आंसर में क्या होना चाहिए, किसी भी आंसर को लिखने से पहले आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है, बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए राइटिंग स्टाइल में, implementation of the ACT का, and then the inclusion of themes in your answer that is required. Then how you guys are going to prepare the plot, means the summary you need to write down in your own words. Then the characters you need to make the major and the minor character, then make a chart of all these characters so that you can identify easily. And then the themes, you must know the themes of each and every novel in a better manner. And the last bit we need to have is the narrative techniques. Then what is really here are the basics that I told you earlier. तो ये करना है आपको। अब क्या करना है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर पीपल और लाइक कर दिया करो यार। लाइक में बड़ी कंफ्यूजन होती है, सारी वीडियो देख लो पेपर में क्वेश्चन में आते हैं। यू डोंट मेक लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, इवन आई नीड इंस्पिरेशन समहाउ कि यार मेरे को मजा आ रहा है काम करने की। टिल देन जल्दी मिलते हैं, बाय टुमारो, क्योंकि अब पेपर से पहले डेली एक वीडियो आपके लिए बनती है। बाय गाइस।